Hello everyone. This is the recording of our Father's Day special workshop which we conducted on our Facebook page. This workshop was exclusively for kids where they tried their hands with us to make this lovely accordion book. Watch this video till the end to see few samples which we received from the kids who created the book with us and be amazed with their creativity. So let's get started. The basic thing that we need, these are the card paper. The normal जो drawing book होता है, that only I am using here. You can use white also, you can use colorful also, as it is as per your wish. Okay. So second is, these are two cardboard pieces that I am using here. These are the normal cardboard, the cereal boxes I am using here. Some decorative tapes, if you have any. If you are not having these type of tapes, you can use normal tape also. And next I am using some stickers. These are the stick-ons to decorate it more. So this is the ribbon, colorful pens, crayons, whatever coloring material you having, you can use that. And the glue stick or glue, and some gift paper. These are the leftover gift papers that I am using here. If you are not having these, you can use any scrapbook paper or colorful paper, whatever is available with you. We will first take these white papers. These are A4 size paper. Okay. And first we will fold these in half like this and make mark here. We will fold both the pieces like this. Okay, like this I have folded it in half, and after that I am cutting this from this mark. So we are having here 4 pieces. Okay. And the next step that we will do is, we will take one piece and then fold it again in half like this. Okay. So this is the one fold that we have done. इस तरह से हम चारों पीसेस को फोल्ड कर लेंगे. So 1, 2, 3 and 4. All 4 pieces we have done. So now we will take these 2 pieces and place it like this. उसे ऐसे place करिए दोनों pieces को. Then we will use these decorative tapes to join this. So place the pieces like this and then join these with like this. Okay, and then cut it. ये देखिए दोनों पीसेस को हमने इस तरह से ज्वाइन किया है फ्रॉम हियर सेंटर में. एंड नाउ वी विल फोल्ड इट फ्रॉम सेंटर. यहाँ पे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा है देन वी विल कट इट लाइक दिस. ओके. और अगर आपके पास ये डेकोरेटिव टेप नहीं है तो आप नॉर्मल सेलो टेप से भी इसे कर सकते हैं, या फिर पेपर की कटिंग करके उसको भी, यहाँ पर कलरफुल पेपर है या नॉर्मल टेप है, व्हाइट टेप जो आती है, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी डेकोरेटिव और वॉसी टेप. सो ये मेरा 1W इज रेडी. ओके, इट इज लुकिंग लाइक W और M. द सेम वे I am placing this another set. Okay, we will join it and equally इसको आपको join do it करना है and place it in center. Now fold it like this. So ये हमारा दूसरा फोल्ड भी रेडी हो गया है. So these two parts we have prepared.
नाउ दिस इज द थर्ड फोल्ड दैट वी आर मेकिंग. अब जो हमारे दोनों पार्ट थे, अब उसको हमें ज्वाइन करना है. एंड ज्वाइन इट फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है ताकि ये सेंटर से ज्वाइन हो जाए. इस तरह से हमने इसके सारे फोल्ड्स बना लिए हैं. आई विल शो यू अगेन. यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है टेप का वो मैं कट कर रही हूँ. हमने सारे फोल्ड बना लिए हैं और यहाँ पे डिफरेंट कलर का टेप यूज किया है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके इतने सारे फेसेस बन गए हैं. ओके, नाउ हियर कम्स अ ड्राइंग पार्ट. ओके, सो वी विल यूज अ पेंसिल, इरेजर एंड कलर्स. सो ऑन द फर्स्ट पेज, this one, like first fold that we will leave here, and this is the second. Here we will draw something. So here I am writing Super Papa, as Papa is superhero for everyone, right? So here I am making here a big mustaches for Papa, like this. Okay, and here we will write my Super Papa. Okay, so if you want to first write and then you can make it with color also. I am just making a light writing here. I am writing here super, then we will color it with. Okay, here I am writing Papa. You can write dad also, you can write daddy, or whatever you call your father, you can write that. Okay, like this. मैंने यहाँ पे लिख लिया है. बिल्कुल लाइट उसमें लिखना है बिकॉज इसके बाद हम उसे कलर करेंगे. सो नाउ वी विल कलर दीज मुस्टैचेस विद ब्लैक. सो पापा की मुस्टैचेस रेडी हो गई हैं. नाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स. यू कैन यूज द कलर ऑफ योर चॉइस. सो हियर आई एम यूजिंग दिस ग्रीन कलर और आई एम राइटिंग हियर एस. आप अपनी हैंड राइटिंग में जो भी आपको मैसेज लिखना है आप अपने पापा के लिए लिख सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज. सो हियर थोड़ा सा कैलीग्राफी हम करेंगे. इस तरह से वन साइड पे हमें डबल थोड़ा थिक उसको करना है तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल. एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर फॉर पापा. सेम वे में थोड़ा सा लेटर्स को डेकोरेटिव बनाते हुए लिखेंगे. For my, you can use any color of your choice in your own handwriting. Here I am making a small bow and we will color it also. इस तरह से मैंने ये लिखा है My Super Papa. This side we will leave for the picture, but अभी यहाँ भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे. So इसका outline you can make like dots here also. You can make line or whatever design you like, you can make this outline. इससे एक फिनिशिंग टच आता है बॉर्डर्स बनाने से. और यहाँ पे मैं बनाऊंगी some designs like I will make a hat, small hat like this, or here I am making the goggles. You can make like this and we will add a picture here. So I am leaving this place empty. In the last, when we finish, we can add the picture here. So these two are ready and now I am turning this page. Okay, so first we will draw an outline, a heart shape like this.
Now we will color this. The heart we will color with the red color. So I am leaving blank right now. So the heart shape I am coloring with red color. And this moon I am using the blue color. This is freehand calligraphy, like you can decorate it in any way you want. We will make a moon also here, or if you are having any sticker you can also use that, and you can make some stars also. I am having these decorative stickers, so I am using this here in between, बीच में थोड़ा थोड़ा हम ये भी यूज करते जाएंगे, इससे बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा. It will add some glitter to it. This space I am leaving for picture. You can collect your favorite picture with your father and add it here. I will show you. You can add the picture with these stickers also. Okay, so the next that we are going to draw is, so here I am first making a trophy here, right? Like this. You can draw the trophy shape, and here two round shape like this for trophy. And now we will write our message here. You are the best because, now you have to write 3 points here. Okay kids, all of you write 3 points for your dad. What you like with your dad, what you love to doing with your dad, you love to play with your dad, right? Okay, so you can write 3 reasons here. You are the best because, here you have to write the 3 points. Okay, now we will color this part, trophy part. Okay, so I am using this yellow color for giving it a golden look. If you are having a golden shade, then that also you can use. It will give a very good look to the trophy. Like this we have made a trophy, and in center I am making this circle, and in center we will write this 1 is for best, and here we will make 5 stars for a dad. जब आप लोगों को भी स्कूल में स्टार्स मिलते हैं, then you feel good, right kids? Like that, if you give stars to your father also, they will also feel good. Okay, so now this is the last part that we are doing. Now we are using a very simple drawing here. I am making one oval shape, and here a little small oval shape. Okay, this is little funny drawing of you and your dad. Isn't it looking like potato? Yeah, Mr. Potato. And we will make legs, and here hands like this. Okay, so here you can write message you and me. Here we will write with different color, best buddy. We will make some heart shape here with this red color. Randomly you can make different shape, stars also you can make, smiley you can make. Okay, this space I am leaving for the picture, so we can add the picture here. So you can add these stickers to stick this picture. So this is done. I will show you again. This is my super papa. I love you to the moon and back. Here I have added one picture, and this is the best
best dad trophy, and you can write your message here for your dad. And dad, you and me are best buddies, right? So here I have added one picture. So this is inner part is ready now, so we are keeping it aside. Now we will make its cover. Okay, so I am using these 2 cardboard pieces. The size which I have taken is little bigger than this portion, inner portion. I am using this wrapping paper. ये जो हमारा gift wrapping paper होता है, that I am using here. So I am first folding it in 2 parts like this, so that दोनों pieces एक ही बार में इसको हम कट कर सकते हैं. I am taking a little bigger piece so that we can fold it inside. And now इसको भी हम हाफ में कट कर लेंगे. इस तरह से दोनों पार्ट्स को मैंने कट कर लिया है. आप यहाँ पे कोई भी कार्डबोर्ड जो हमारे कार्टन्स आते हैं कुरियर्स के, वो भी यूज कर सकते हैं. ये सीरियल बॉक्सेस हैं जो हमारे केलॉग्स चोकोज आते हैं, मैंने वो यूज किया है. So whatever material is you are having with you, so you can recycle that also, because इसको हमें just cover ही करना है. So we can use any waste cardboard or any hard paper that we are having it. तो अब हमने जो wrapping paper था उसको आप ऐसे उल्टा रखिए and then place it like this. Okay, so first we will apply glue on it. So मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लू लगा रही हूँ like this. Okay, and then we will place it here. Keep this space for folding. Okay, इसी तरह से सेकंड वाले को भी हम ग्लू लगाएंगे. इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए, तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा. नाउ इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा हमें कट करना है. यहाँ से चारों कॉर्नर्स को हम कट करेंगे सो दैट ये इजीली फोल्ड हो जाए. तो दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं हमने. नाउ यू अप्लाई ग्लू हियर, और इसको भी हम फोल्ड करेंगे. Fold all the sides here. In the same way we will do it for this. तो हमारे बुक के दोनों पार्ट्स बन गए हैं, करेक्ट. सो आई एम कीपिंग दिस वन पार्ट फॉर अपर पोर्शन, and जो lower portion है, this will be the lower part. So here we will cut a ribbon. थोड़ा आपको रिबन को लॉन्ग रखना है, इतना स्पेस यहाँ पर एंड देन इतना स्पेस यहाँ पर. इसको हम कट कर लेंगे. तो मैंने ये रिबन को कट कर लिया है, देखिए. और इसको हम यहाँ सेंटर में ग्लू करेंगे. कीप बोथ द पीसेस लाइक दिस. So this is our lower part, and we will apply first glue here all 4 sides and place this part and stick it properly. Now fold it like this. This is now our upper part. So we will do the same process here. Now you can fold it like this. थोड़ा इसको प्रेस करिए so that अच्छे से वो स्टिक हो जाएगा. So जब तक ये स्टिक हो रहा है, we will keep it aside and we will cut another paper like this. मैंने कट किया है और इसको सेंटर में हम यहाँ पे बनाएंगे. So I am using this much size here and I will write my message for Father's Day wishes. इसको भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे. चारों साइड पे हम ये डेकोरेटिव टेप लगाएंगे.
इफ यू आर हैविंग एनी लेस, कोई भी आपके पास लेस है या कोई स्ट्रिंग है डेकोरेटिव, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। नाउ हियर वी विल राइट आवर विशेस, we'll write happy Father's Day. Okay, so I am first writing with the pencil. You can write your message. So kids, you can design in your own way, whatever way you like. You can use different color also. Okay, this ribbon I'm making with this black color, and in the center we will write father. Just little designing we will do here. You can make 2 hearts, stars, or whatever you like. So here I am applying the glue and we will stick it. So I am adding this star here and here. If you are having any other stickers, flowers, you can use that also. So I will show you the final look. See, you can use as many folds you want. This is our accordion book, and then wrap it with the ribbon, and it's ready to give to your father on Father's Day. And here you can see the lovely work done by the kids. So I hope you enjoy this workshop. Thank you for watching. See you in the next workshop. Bye bye.